God bless students. Dear students, in today's lesson we shall learn from unit number 4, Hazrat Asma Razulullah Anhu, and we shall be doing the translation and paraphrasing of paragraph number 4. Okay, dear students, first of all we shall look at the words chosen from paragraph number 4. The first word we have on the slide is disbeliever, and the synonyms of disbeliever are infidel, pagan, और उर्दू में disbeliever को कहा जाएगा काफिर. The next word we have is fury, and the synonyms of fury are rage, anger, wrath, और उर्दू में fury को कहेंगे गुस्सा. The next word we have is violently, and the synonyms of violently are forcefully, wildly, और उर्दू में कहेंगे ज़ोर ज़ोर से या शिद्दत से. Next word we have is demand, and the synonyms of demand are enquire, ask, or you can say question or interrogate, और उर्दू में कहेंगे पूछना या दरियाफ्त करना. Number 5 word we have is politely, and synonyms of politely are courteously, respectfully, and the meaning of politely is पूछना, दरियाफ्त करना. Number 6 statement, and the synonyms of statement are declaration, report, और उर्दू में कहेंगे स्टेटमेंट को बयान. Number 7 counter, and the synonyms of counter are adverse or opposing, और उर्दू में कहेंगे जवाबी या उलट. Number 8 infuriate, and the synonyms of infuriate are enrage, annoy, और उर्दू में कहेंगे गुस्सा दिलाना. Number 9 steadfast, and the synonyms of steadfast are resolute, firm, और उर्दू में कहेंगे steadfast को साबित कदम रहना या मुस्तकिल मिजाज रहना. Number 10 reveal, and the synonyms of reveal are show और unveil, और उर्दू में कहेंगे reveal को जाहिर करना, राज आश्कार करना. Dear students, here we have the paragraph number 4 before us on the slide. We shall be doing the paraphrasing and the translation. On the night of migration, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. When Hazrat Abu Bakr Siddiq and Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam were migrating from Makkah to Medina, their rival, a chief of the tribe, Abu Jahl, headed towards Hazrat Abu Siddiq's home. He began to knock at the door violently, and he very furiously started knocking at Hazrat Abu Bakr Siddiq's home door. Addressing Hazrat Asma Razulullah Anhu, he demanded, "Where is your father?" And while speaking to Hazrat Asma, when she opened the door, he questioned, "Where is your father?" As Asma politely answered, replied,
How would I know? This response shows the wisdom and the courage of Hazrat Asma Razallahu Anhu. And the answer of Hazrat Asma Razallahu Anhu showed her intelligence and the bravery. She didn't make a statement that would give them a clue. She did not make any kind of hint or sign which will indicate the reality. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. She very simply asked a opposing question which enraged Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma Razallahu Anhu's face so hard that her earring fell off. And Abu Jahl, hearing Hazrat Asma Razallahu Anhu, got into anger, and he slapped on Hazrat Asma's face very badly that her earring fell down. But she remained steadfast and did not reveal the secret, but she remained firm and did not open or show or unveil, or you can say disclose, the secret. Dear students, now we shall do the translation in Urdu. On the night of migration, Hijrat ki Raat, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl जो काफिरों जो कबीला का एक सरदार, जो काफिरों के कबीले का एक सरदार था, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home, वो बहुत गुस्से में Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ. He began to knock at the door violently. उसने ज़ोर ज़ोर से या बड़ी शिद्दत के साथ दरवाज़े को खटखटाने लगा. Addressing Hazrat Asma Razallahu Anhu, he demanded, "Where is your father?" Hazrat Asma से मुखातब होते हुए आपने पूछा या दरियाफ्त किया, "Where is your father?" कि आपके वालिद साहिब या आपके अब्बा कहाँ हैं. She politely replied, आपने बेहद शाइस्तगी के साथ जवाब दिया, "How would I know?" मैं किस तरह जान सकती हूँ. This response shows the wisdom and the courage of Hazrat Asma Razallahu Anhu. ये जवाब Hazrat Asma Razallahu Anhu की हिम्मत और उनकी जहानत या दानिशमंदी को जाहिर करता है. She didn't make a statement that would give them a clue. Hazrat Asma ने कोई ऐसा इशारा ना, कोई ऐसी बात ना कही जिससे उनको कोई भी इशारा मिलता. She simply posed a counter question. आपने बड़ी सादगी के साथ एक उलट सवाल दाग दिया या पूछ लिया या कर दिया. That infuriated Abu Jahl, जिसने हज़रत अबू जहल को बहुत गुस्सा दिला दिया. He slapped Hazrat Asma's face so hard. उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु के फेस को इस कदर ज़ोर से मारा that her earring fell off, कि उसके कान की बाली नीचे गिर गई. But she remained steadfast, लेकिन आप साबित कदम रहीं या मुस्तकिल मिजाज रहीं, and did not reveal the secret, और उस राज को जाहिर ना किया. Dear students, now we shall review our words that we have learned from paragraph number 4. The first word we have is disbeliever, and the meaning of disbeliever is infidel or pagan, और उर्दू में कहेंगे काफिर. Fury, fury means rage, anger or wrath, और उर्दू में कहेंगे गुस्सा. Violently means forcefully, wildly, और उर्दू में कहेंगे गुस्से से. Demand, enquire और ask, और उर्दू में कहेंगे पूछना, दरियाफ्त करना या मुतालबा करना. Politely, politely means courteously, respectfully, तो उर्दू में कहेंगे नरमी से या शाइस्तगी से. Statement, statement means declaration, report, और उर्दू में कहेंगे बात या बयान. Counter,
काउंटर मीन्स एडवर्स, ऑपोजिंग, और उर्दू में कहेंगे उलट या जवाबी. इन्फ्यूरिएट, एनरेज और एनॉय, और उर्दू में कहेंगे गुस्सा दिलाना. स्टेडफास्ट, रेजोल्यूट और फर्म, और उर्दू में कहेंगे साबित कदम या मुस्तकिल मिजाज. एंड लास्ट वर्ड वी हैव ऑन द स्लाइड इज रिवील. रिवील मीन्स शो और अनवेल, और उर्दू कहेंगे राज आश्कार करना या जाहिर करना. Students, here we have some of the words selected from paragraph number 4 for you as an assignment. You will use these words in your own sentences, and your words are violently, politely, statement, infuriate, reveal. Dear students, please attempt these words into your own sentences and send me your responses on my personal number. Thank you and God bless you.